Hello, dost. A happy new year to all of you. And a new year is not just a new calendar, but it's a new chance to grow, improve, and reach your dreams. Success comes to those who are ready to learn from the past and work hard for the future. Stay always positive, keep learning from everything, and trust your journey. Right? And thought for the day is the best way to predict the future is to create it. The best way to predict the future is to create it, right? So let's begin. Now we will focus on answer writing practice for question number 5 from the corporate and economic law question paper, December 24 term of examination for CMA final group 3, and we will review suggested answers to understand the ideal way to frame responses against each question, and then we will practice answer writing to improve your presentation and time management skills, right? And remember, this post exam practice is your golden chance to refine your approach and ensure perfection for the next attempt, right? So let's make every word count and start your 2025 with a mindset of excellence. Okay, so question number 5, question number 5a, question number 5a is all about, you can say, CSR project, right? तो क्या है ये क्वेश्चन? Examine the important aspect relating to due diligence and various aspects to be seen in the context of evaluation of CSR projects before the project cost are incurred, right? तो सी ये जो CSR का टॉपिक है, ये CSR के ऊपर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट? कंपलसरी क्वेश्चन आता है CSR से, लगभग 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है CSR में, राइट? एंड ऑल्सो MCQ में भी CSR का क्वेश्चन को देखने को मिलता है. तो CSR का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एंड यहाँ पर भी December 24 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया है अबाउट CSR, राइट? सो आज वो क्वेश्चन नंबर 5a रिगार्डिंग CSR प्रोजेक्ट, वो क्वेश्चन नंबर 5a के अगेंस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 5a, क्वेश्चन नंबर 5a, राइट? ये क्या है? ड्यू डिलिजेंस, राइट? सो यू कैन राइट दैट ड्यू डिलिजेंस in CSR project, राइट? तो अब ये जो ड्यू डिलिजेंस है CSR प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या ड्यू डिलिजेंस है? सी देर आर सो मेनी ड्यू डिलिजेंस which we need to remember, that there are so many due diligence like legal compliances, alignment with CSR objectives, feasibility, stakeholder engagement, then impact assessment, then also risk management, transparency and reporting, ethical considerations, and then monitoring and evaluations, right? So there are up to 10 due diligence which we need to understand and remember. But for examination point of view, we only need to mention all about 7 most important due diligence in CSR projects, and also we need to explain against each due diligence, right? So let's write due diligence in CSR projects. First and most important है लीगल कंप्लायंस. आपको लीगल कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा whether CSR इज एप्लीकेबल और नॉट, राइट? लीगल कंप्लायंस ensure that the project align with section 135 of the Companies Act 2013 and other regulation including tax and environmental laws, right? Then जो सेकेंड आता है वो आता है अलाइनमेंट विथ CSR ऑब्जेक्टिव. Alignment with CSR objective means the project must match the company's CSR goals such as community welfare, education और sustainability. Then और एक due diligence है, वो है feasibility. Feasibility means what? Feasibility means
assess the financial and operational feasibility, including long-term sustainability of the project. Including long-term sustainability of the project, right? Then next, you can write stakeholders engagement. Stakeholders engagement. This is very, very important due diligence in CSR. Stakeholder engagement is most essential in order to continue the CSR projects, right? So stakeholder engagement means consult with the community and relevant stakeholders to address their needs and to gain support, right? So stakeholder engagement is very crucial in order to maintain the consistency while implementing the CSR projects. Then another point for due diligence is, you can say, impact assessment. Impact assessment, right? जो CSR का जो प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, दिस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स और नॉट. तो दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट असेसमेंट. मीन्स इवेलुएट करना है द एक्सपेक्टेड सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स विथ मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर सक्सेस. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर सक्सेस, राइट? देन और एक ड्यू डिलिजेंस है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट करना है. Right. Risk management means identify risk and create mitigation plans, ensuring that the project runs smoothly. Then और एक important जो ड्यू डिलिजेंस इन CSR प्रोजेक्ट है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग. ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग. अब ये ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग क्या है? सी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग मीन्स मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन and set of reporting mechanism for continuous updates, right? तो simple sentence ही लिखना है. No need to write hi-fi very complex sentences. You just need to write only own simple words, right? Transparency and reporting. तो इतना पॉइंट्स लिखने में भी 7 to 7 मार्क्स मिल जाएगा. And if you want to add more, then you can add that ethical considerations, right? Then monitoring and evaluating ME, right? And these are the things, but you just need to mention up to these 7 important due diligence in CSR projects, right? And अगर explain करना है against such key points, then you can write that in case of legal compliance, you can write ensure the projects align with section 135 of the Companies Act 2013, राइट? जो CSR का जो लीगल कॉम्प्लायंसेस होता है वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होता है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉलो करना चाहिए, जैसे कि 1000 करोड़, 500 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़, राइट? एंड यू मस्ट हैव at least 2% ऑफ लास्ट 3 years का जो है प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का कंट्रीब्यूट करना है, राइट? तो ऐसे ही जो लीगल कंप्लायंसेस है वो सब फॉलो करना है. एंश्योर द प्रोजेक्ट्स अलाइंस विद सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड other regulation including tax and environmental laws, right? So this is first and most important. You need to follow the legal compliances. Then alignment with CSR objectives. The project must match the company's CSR goals, such as you can say community welfare and then education and then sustainability, right? So alignment with CSR objective. You can write that the project must match the company's CSR goals. The company's CSR goals such as community welfare,
community welfare, then education or sustainability, right? Alignment with CSR objective होना चाहिए. The project must match the company's CSR goals such as community welfare, education and sustainability, right? Then third most important due diligence in CSR projects is feasibility. अब ये feasibility means what? Feasibility means access करना है the financial and operational feasibility. Assess the financial and operational feasibility and operational feasibility, right? Including, you can write, including long-term sustainability of the project. Then 4, stakeholders engagement. This is very, very important. Consult with the community and relevant stakeholders. ये जो consult with stakeholder engagement है, ये important इसलिए है, you need to help of stakeholders in order to continue such CSR project. Unless otherwise stakeholders engagement, you cannot implement such CSR project, right? So consult with the community and relevant stakeholders to address their real needs and gain support, right? This is very important due diligence in CSR projects. Then next, impact assessment. अब impact assessment जो है वो सबसे important है. वो इसलिए है, ये जो CSR प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है ये अकॉर्डिंग टू जो गोल्स है CSR प्रोजेक्ट का, तो वो गोल्स के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाइली हो रहा है या नहीं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए इम्पैक्ट असेसमेंट का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, राइट? सो impact assessment evaluate the expected social, environmental and economic impacts with measurable key performing indicator, right, for success. So you can write that in case of impact assessment, evaluate the expected social, environmental and economic impacts with measurable key performance indicator which is called KPI, key performance indicator which is called KPI for success, right? Then sixth most important due diligence in CSR project is risk management, right? Risk management means identify करना है risk and create करना है mitigation plan so that ensuring the project runs smoothly or not, right? So risk management means identify risks and create mitigation plan and create mitigation plans ensuring the project runs smoothly.
right? Identify risk and create mitigation plans, ensuring that the project runs smoothly. And last most important, ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग. ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, तो आपको रिपोर्टिंग करना है, मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन प्रॉपर documentation and set of reporting and set of reporting mechanism for continuous update. Mechanism for continuous updates, right? तो इतना ही आपको लिखना है ड्यू डिलिजेंस के केस में, राइट? अब 7 point is very important in due diligence in CSR projects. First, you need to follow the legal compliances according to section 135 of Company Act 2013 relating to CSR, and then alignment with CSR objective. CSR objective से objective के साथ alignment होना चाहिए, feasibility होना चाहिए, stakeholder का engagement होना चाहिए, देन इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, देन रिस्क मैनेजमेंट करना है, देन ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग करना है, राइट? तो ये जो 7 पॉइंट्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरे के पूरे फुल टू फुल 7 मार्क्स मिल जाएगा, राइट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5B. केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है. तो क्या है ये क्वेश्चन? सी, ये जो क्वेश्चन नंबर 5B है, केस स्टडी इज ऑल अबाउट public limited company has 600 members and the issued and paid off capital is 5 crore consisting of 5 lakh equity shares of rupees 100 each. Then 90 members holding 10,000 equity shares filed a petition before the tribunal for the purpose of relief against operation and mismanagement by majority shareholders. In the light of the above, answer the following. Examine the relevant provisions of the law and decide whether the said petition is maintainable or not. In case 40 members subsequently withdraw their consent, what will happen to the petition? In case the total members are less than the requirement, is it possible to file a petition? If so, then under what circumstances? Under what circumstances, right? तो ये है केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन है. तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी इजीली आंसर दे पाएंगे, राइट? सो लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 5A का आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट B, राइट? ये है केस स्टडी, राइट? अब केस स्टडी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, एंड ये आगे भी देखने को मिलेगा इन जून 25 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन. तो इसलिए आप लोगों को तैयार होकर रहना है, राइट? तो ये जो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है, जो है एग्जामाइन द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड डिसाइड व्हेदर द सेड पिटिशन इज मेंटेनेबल और नॉट, राइट? तो राइट, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन. Maintainability of the petition. See, as you know that under section 244 of the Companies Act 2013, a petition for relief against operation and mismanagement can be filed by at least 100 members or members holding 10% of the paid up capital in case of a public company, right? तो ये जो मेन जो conditions है ये satisfy होना चाहिए. But in this case the company has only 600 members, right? And the petition is filed by 90 members holding 10,000 equity shares, right? So since 90 members are filing, this does not mean the 100 members criteria, right? But however, you can see that the petitioners hold shares worth 10 lakh, means 90 members into 10,000 equity shares, right? Of 100 each, right? 10,000 equity shares of 100 each means 10 lakh shares, which is 2% of the total paid up capital of 5 crore, right? For a public company, 10% of the paid up capital is the threshold.
So this petition is not maintainable under section 244 for lack of required shareholding, right? So you can write that answer to question number फर्स्ट मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है. यू कैन राइट दैट अंडर सेक्शन 244 ऑफ, आपको अगर सेक्शन पता है तो सेक्शन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए पिटिशन for a relief against operation and mismanagement can be filed by, जो लीगल प्रोविजंस है वो मेंशन करना है, at least 100 members or members holding 10% of the paid of capital in case of a पब्लिक कंपनी, राइट. ये है एक्चुअल प्रोविजन. एटलीस्ट 100 मेंबर्स होना चाहिए और मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ द पेड ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, राइट. बट यू कैन राइट दैट इन दिस केस members holding 600 members and the petition filed by 90 members holding 10,000 equity shares, right. The company has 600 members. And the petition is filed by 90 members holding 10,000 equity shares, right. Since 90 members are filing, you can say this does not meet the 100 members criteria, requirement or criteria, whatever, right. So at least आपको 100 members चाहिए होता है, at least 100 members, right. But here the company has 600 members and the petition is filed by 90 members holding 10,000 equity shares. Since 90 members are filing, this does not meet the 100 members requirement, right. But you can write, however, the petitioner hold shares worth 10 लाख. 10 लाख कैसे? क्योंकि 90 मेंबर्स हैं, राइट. 10,000 इक्विटी शेयर्स है and ₹100 each, right. ₹100 each. तो ऐसे ही 10 lakh shares which is 2% of the total paid up capital of 5 crore, which is 2% of the total paid off capital of rupees 5 crores, right. So here for a public company 10% of
the paid of 10% of the paid of capital is the threshold limit, is the threshold limit, right? So again this petition is not maintainable under section 244 for lack of a required shareholding, right? 244 फॉर लैक ऑफ रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग। तो इतना ही आपको लिखना है अच्छे से, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन, राइट? तो आपको पहले पूरे जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है उस सेक्शन 244 के अकॉर्डिंग पूरे अच्छे से याद होना चाहिए कि कितना मेंबर्स चाहिए होता है। तो एटलीस्ट 100 मेंबर्स चाहिए होता है और मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी। बट हियर इन दिस केस द कंपनी हैज 600 मेंबर्स बट द पिटिशन इज फाइल्ड बाय ओनली 90 मेंबर्स holding 10,000 equity shares, right? So since 90 members are filing, this does not meet the 100 members requirement. Does not meet the 100 means 100 members requirement. However, again the petitioner holds shares of rupees 10 lakh. 90 member कैसे ना 90 members 10,000 equity shares of 100 each, which is only 2% of the total paid off capital of 5 crore, right? So for a public company, 10% of the paid off capital is the threshold, and so this petition is not maintainable under section 244 for lack of required shareholding, right? तो ऐसे ही आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, राइट? सो दैट कि एग्जामिनेशन को पता चले कि नहीं कैंडिडेट को पता है मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटिशन के बारे में, राइट? तो ऐसे ही आपको केस स्टडी टाइप में प्रेजेंट करना है। ऐसे नहीं कि 2 to 3 लाइन्स लिख कर आ जाए तो मार्क मिल जाएगा। आपको पूरे के पूरे जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन को इंटरप्रीट करना है अच्छे से, एंड ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। देन सेकेंड कंडीशन क्या है? सी, ये जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन बहुत ईजी है। वो बोल रहा है कि इन केस 40 मेंबर्स सब्सिक्वेंटली विथड्रॉ देयर कंसेंट, व्हाट विल हैपन टू द पिटिशन, राइट? तो here answer to question number 2, effect of withdrawal of 40 members consent, 40 members consent, right? So see here, if 40 members withdraw their consent, leaving only 50 members in support, right? And the total support falls below the required 100 members or 10% of the paid up capital, right? So as a result, the petition will not be maintainable anymore and it will be dismissed, right? Here is simple answer to question number 2, right? So you can write that if 40 members withdraw their consent, then leaving only 50 members in support and the total support falls below the required 100 members or 10% of the paid off capital. As a result, the petition would not be maintainable anymore, right? And it will be dismissed. Simple. इतना ही लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट?
देन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, in case the total members are less than the requirement, is it possible to file a petition? If so, under what circumstances? See, if you can say that a petition can still be filed under section 244 if the members fall below the required threshold in special circumstances, right? जैसे कि tribunal's discretion अगर है, right? The tribunal can allow a petition even if the required number of members or shareholding is not met, if it finds the case involves serious operation or mismanagement, right? So while the default requirement is 100 members or 10% of shareholding, the tribunal may grant relief if it deems the case justifiable despite the lack of support, right? So answer to third number of question, filing petition with less than required members. Filing petition with less than required members. So here you can write that if tribunal approved, then it can be possible. But कैसे? Right? A petition can still be filed under section 244 if the members fall below the required threshold in special circumstances such as tribunal's discretion, right? The tribunal, you can write that the tribunal can allow a petition even if the required number of members or shareholding is not met, if it finds the case involves serious operation or mismanagement, right? And you can write thus, while the default requirement is 100 members or 10% of shareholding, the tribunal may grant a relief if it deems the case justifiable despite lack of support, right? तो ये है satisfactory answer for क्वेश्चन नंबर 3, फाइलिंग पिटिशन विद लेस देन रिक्वायर्ड मेंबर्स, राइट? तो वहां पर कोर्ट अगर चाहे तो अप्रूव कर सकते हैं, राइट? ए पिटिशन कैन स्टिल बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 244
if the members fall below the required threshold in special circumstances such as ट्राइब्यूनल का डिस्कशन, राइट, ट्राइब्यूनल डिस्कशन के केस में it is possible. The tribunal can allow a petition even if the required number of members or shareholding is not met if it finds the case involves serious operation or mismanagement, right? Thus, while the default requirement is 100 members or 10% of shareholding, the tribunal still may grant relief if it deems the case justifiable despite lack of support, right? तो ऐसे ही आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चन का आंसर देना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए. सी, ये जो आंसर आप प्रेजेंट करोगे, देखो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपको स्पेस देना होगा, राइट. देन आपका जो आंसर है वो पूरे अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना होगा, राइट. एंड सेंटेंस में कोई एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, एंड कहीं पर भी क्रॉस मार्क नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी क्रॉस मार्क होना नहीं चाहिए, राइट. तो ये एक बहुत इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है. मैंने जैसे ड्यू डिलिजेंस इन CSR प्रोजेक्ट के केस में मेंशन किया, पहले हेडिंग्स में मेंशन किया, देन 2 to 3 लाइन्स में एक्सप्लेन किया. फर्स्ट मैंने लिखा लीगल कंप्लायंस, then alignment with CSR objectives, then feasibility, then stakeholders engagement, then impact assessment, then risk management. Then मैंने प्रेजेंट किया 2 to 3 सेंटेंस ओनली, नॉट मोर देन 2 to 3 सेंटेंस, राइट. ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपको. एंड केस स्टडी टाइप में आपको प्रोविजन, पहले आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन में आपको जो रिक्वायरमेंट प्रोविजंस है वो रिक्वायरमेंट प्रोविजंस को मेंशन करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है अंडर सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a petition for relief against operation and mismanagement can be filed by at least 100 members or members holding 10% of the paid up capital in case of a public company, right? And then interpret किया कि in this case the company has only 600 members and the petition is filed by 90 members holding 10,000 equity shares, and since the 90 members are filing, this does not meet the 100 members requirement. तो at least 100 members होना चाहिए. And again, however, the petitioner holds shares worth rupees 10 lakh. 10 lakh means 10,000 equity shares of 100 each, which is only 2% of the total paid up capital of rupees 5 crore. Right. So for a public company, 10% of the paid up capital is the threshold. So this petition is not maintained under section 244 for lack of required shareholding. तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा ही आपको प्रेजेंट करना है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2I जो है, डबल आई जो है, इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ 40 मेंबर्स कंसेंट, राइट. तो इफ 40 मेंबर्स इज विड्रॉन देयर कंसेंट, लिविंग ओनली 50 मेंबर्स इन सपोर्ट एंड स्टिल द टोटल सपोर्ट falls below the requirement of 100 members or 10% of the paid up capital. As a result, the petition will still not be maintained anymore and it will be dismissed. Then third, filing petition with less than required members. If tribunal approve, then it can be possible. A petition can still be filed under section 244 if the members fall below the required threshold in special circumstances, such as कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, राइट. कोर्ट अगर चाहें can allow a petition even if the required number of members or shareholding is not met if it finds the case involves serious operation or mismanagement, right. तो ऐसे ही आपको आंसर को प्रेजेंट करना है. तो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5A. एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट. So stay tuned, and this is it all about from my side. Thank you so much for your support. Thank you so much for your patience, and happy studying.